So question 16, Arush, we have cos 2x plus alpha sin x equal to 2 alpha minus 7. S is the set of all values of alpha such that this equation has a solution. ठीक है, Yeah. S find करना है, we have to find the set S. Basically, we have to find all the possible values of alpha for which this equation will have a solution. Yeah. तो एक काम करते हैं, पहले तो cos 2x को हम कन्वर्ट कर देते हैं sin x में. So you were right, we'll have to do Ah, this. We'll have to convert cos 2x to sin x. That we can do easily. 1 minus 2 sin 2 square sin x square x plus alpha sin x equal to 2 alpha 12 minus minus 7. अब एक काम करते हैं, रीअरेंज करते हैं इसको. So I am keeping everything on the left and sin square x वाला टर्म पहले, sin को फिर हाँ, alpha sin x, and then we have 1 plus 7 हो जाएगा, तो 8 minus 2 alpha equal to 0. Sin square x वाला टर्म पॉजिटिव बना देते हैं. So for that we'll have to change the sign of every term. It will be 2 sin square हाँ, x minus alpha sin x minus 8 plus 2 alpha, or I can write it as plus 2 alpha minus 8 equal to yeah. 0. ठीक है. Now here Arush, sin x, So oh sin this is a x quadratic in sin x Arush. यहाँ से अगर हम yeah. sin x का वैल्यू फाइंड करें यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, we will get alpha हाँ, plus minus root of alpha square minus 4 into a 4 into into c 2 into upon yeah. 2 into 2. तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. sin x is equal to alpha plus minus root of alpha square minus 16 alpha plus 64. Look at that term inside the square root, Arush. What do you know about alpha square minus 16 alpha plus 64? This is also quadratic. Okay, or you can directly use the expansion formula and write this as alpha minus 8 the whole Alpha square. minus 8 हाँ वैसे तो वैसे यहाँ से हमें sin x का वैल्यू मिलेगा. So we will get sin x is equal to, the root is gone now, so it is yeah. alpha plus alpha minus 8 upon 4, or sin x is Alpha minus alpha minus of alpha minus 8 upon 4. तो आरुष यहाँ से हमें मिलेगा sin x is equal to 2 alpha minus 8 upon 4. When we take 2 common, तो ये हो जाएगा alpha minus 4 upon 2. alpha minus 4 by 2 सेकेंड, यहाँ से yes sin x का वैल्यू आ रहा है 2, तो ये तो डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा बिकॉज इट कांट बी 2. हाँ नाउ so अल्फा अभी इसको माइनस minus 4, 1 और 1 के अरे बीच हो में गया ना तो आरुष, ये तो अल्फा एग्जैक्टली दिस इज बिटवीन हाँ माइनस 1 एंड 1, तो ये होगा minus 1 और 1 -2, दिस विल बी अल्फा माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 2. तो इसका आंसर आएगा 2 to 6. इट्स बिटवीन 2 and 6. yeah एक सेकंड सॉरी लिखना नेक्स्ट द 17th one, to find the value of cos cube pi by 8 into cos 3 pi by 8 plus sin cube pi by 8 into sin 3 pi by 8. Interesting. Arush, this is pi by 8 and this angle is triple of that. It's 3 pi by 8. yes Okay, and cos cube bhi hai yahan pe, correct? So it's a हाँ very good combination. Basically, we will be using the triple angle so formula. yes yeah तो cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है और sin 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क करते हैं. cos 3 थीटा होता है 43, 4 cos cube theta cos minus 3 cos theta, and sin 3 yes theta is 34. 3 sin yeah 3 sin theta minus 4 sin cube theta ठीक है. अब यहां से हमें cos cube theta मिलेगा, which will be cos 3 theta plus 3 cos theta upon 4, and यहाँ से हमें sin cube theta मिलेगा. sin cube theta will be equal to
3 sin theta minus sin 3 theta, the whole upon 4. Are you following this, Arush? Right. So let's Yes, do sir. this. Let's replace cos cube pi by 8 and sin cube pi by 8 over here. So when we replace cos cube Hmm. pi by 8, that is going to be cos of 3 theta. So 3 pi by 8 3 pi. Yeah. plus 3 cos 3 pi cos by 8 of pi by 8 upon 4. by 4 And this is into multiplied cos with 3 pi by 8. cos of 3 pi by 8. Yeah. अच्छा, फिर यहाँ पे आता है तो साइन क्यूब पाई बाई 8 का भी हम सेम कर सकते हैं. इट इज गोइंग टू बी 3 साइन पाई बाई हाँ, 8 माइनस साइन ऑफ pi by 8 3 पाई बाई minus 8 sine of 3 pi by 8 अपॉन 4 by 4 into sine 3 pi into by we 8. will have same sin 3 pi by 8. ठीक है. Now see both are upon 4 and when we expand the bracket this will be cos square 3 pi by 8. इसको अब सॉल्व करते जाते हैं पूरा प्लस 3 cos of 3 pi by 8 into cos of pi by 8 हाँ, तो साइन वाला टर्म प्लस सर 1 हो जाएगा, तो साइन 3 ओ पाई बाई 8 और 8 वाला नहीं 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 शिट दिस इज सो हो इजी. सकता है, उसको 2 के साथ कर सकता है. नहीं नहीं रुक तो सही, ये हो जाएगा इजीली हो जाएगा. दिस इज माइनस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8. ठीक है. हाँ, सो अरे 1 रे रे हो रे गया रे लास्ट में. नहीं 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 अच्छा, मज़ा वो नहीं आया माइनस यार. करना. दिस हाँ, इज सो इट विल बी मज़ा नहीं आया. 1 बाई डिसअपॉइंटिंग क्वेश्चन हो गया ये तो. दिस इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा व्हिच cos. इज cos 2 थीटा हाँ, का तो फॉर्मूला. cos 2 थीटा होता है. So this will be cos हाँ. of 3 pi by 4 now. हाँ. अच्छा, इसमें से मैं अगर 3 कॉमन ले लूं तो ये होगा cos cos प्लस sin sin. हाँ. Which formula is this? cos of a plus b. A माइनस बी क्योंकि यहाँ पे प्लस है. इट विल बी 3 पाई बाई अच्छा, हाँ. 8 cos a. माइनस पाई बाई 8. Yes. दिस इज इजी स्टफ नाउ. सी cos 3 पाई बाई 4 जो है इट इज लाइक 3 इंटू 45 so it's 135 plus 3 cos what is 3 pi by 8 minus pi by 8 so that will be 2 pi by 8 which is 2 pi by 8, pi by which 4 so is it's pi cos by 4. 45 upon 4. अब cos 135 को अलग एंगल फॉर्मूला से सॉल्व कर सकता है. So you'll get हाँ. minus 1 by root 2 and this is plus 3 by root 2 upon 4. Plus 3 by तो root. इसका आंसर आएगा 2 by root 2 और upon 4. तो 1 upon 2 root 2 is the answer. Yeah. 18th one, if the equation cos raised to 4 theta plus sin raised to 4 theta equal to lambda, sorry, plus lambda equal to 0 has real solutions for theta, then we have to find the values of lambda. See, whenever we have cos raised to 4 theta plus sin raised to 4 theta, Arush, we should always use this formula. There's one expansion formula. So I'm sure you know a plus b the whole square formula, which is a square plus b square plus 2ab. Now, Yeah. if I ask you what is a square plus b square, what will you tell me? So that will be A, a plus b the a whole square plus b minus the whole 2ab. square minus 2ab. So cos Yes. raised to 4 can be written as cos square theta the whole square plus sin square theta the whole square. Yeah. Now we can use that a square plus b square formula and we can write it as a plus b the whole square minus 2 Yes. a square b square. हाँ. तो उससे होगा क्या, ये 1 हो जाएगा और मैं यहाँ पे है ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ. Suppose. ठीक है. तो ये मैंने इसलिए किया बिकॉज नाउ डू यू रियलाइज वी हैव 1 माइनस 2 साइन कॉस द होल स्क्वायर. Yeah. तो इससे होगा क्या आरुष, ये जो 2 साइन कॉस है दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला.
Sine 2 theta. Sine 2. Yes. From here, let us find the values of sine square 2 theta. So what are sine square 2 theta का answer? From here you will get sine square 2 theta by 2 is equal to lambda plus 1. तो यहाँ से हमें मिलेगा आरुष sine square 2 theta is equal to 2 lambda plus 2. Yeah. Now do you agree with me that sine square 2 theta will always be more than 0, less than 1? Yes. So we will get 2 lambda plus 2 is more than 0 and less than 1. Yeah. Chalo, let's subtract this 2 from everywhere. So this will be minus 2. Minus 2. This will be minus 1. And now we can divide by 2. So this will be minus 1. Minus And this will be minus half. minus. Yes. So this is the answer, Arush. Minus 1 to minus half. Yeah.